Right? So first of all, right, you want to become a technical recruiter. So technical recruiter कौन है? Basically somebody who is going to evaluate, shortlist, and select a techie. So when I said KYC yesterday, it's basically nothing but you need to know your audience, and in this case, your audience is a techie. To understand a techie, you should know about technology, right? So when I say you need to know about technology, doesn't mean कि like no आपको coding आना चाहिए, आपको code लिखना चाहिए, but you need to understand technology. So consider this as a car salesperson, right? A car salesperson को he doesn't know about the car, like no car mechanical engineering पता नहीं है उसको. He doesn't know how the engine works, how the fuel injection happens, but he knows about the car. उसका car horsepower क्या है? He understands the car, and he sells the car to you. And we also buy the car basis his convention, who is not an expert, but he understands that. वही चाहिए हमको टेक्निकल रिक्रूटर पर. आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टेक्निकल ऊपर. सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वुड बी ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी. Basically, for a non-techie a guy who wants to become a technical recruiter, how can you understand this technology? Okay, so we'll go one by one. So initial starting per on the technical recruitment side of it, any tech role that you see would fall into three major categories. One would be on the hardware side, second would be on the software side, and third would be on the OS side of it. तो पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या है ये लोग. ठीक है. So first, when you say hardware is very simple. Everybody knows about it. Anything that you touch on a system is basically your hardware, right? So majorly the roles that would come here would be like the IT admin kind of roles, desktop admin. If you go into the virtual infra wala part, then IT infra wala side of it, DevOps, SRE kind of roles. All this falls into the hardware. So hardware is nothing but whatever you touch, whatever you have, or external peripheries that you have, which would support your development or your software, is basically nothing but hardware. The second is software engineering. So any role that you see, you're a Java developer, Node.js developer, full stack engineering, Golang engineers, data engineers, all these are software development side of it. Where basically they develop a product, which is basically nothing but a software, or a service, which is again is nothing but a software, and they deploy it to the market, be it direct market becomes a product, or be it direct to a client, which becomes service based. And then there are other software development roles which would enable this software to work very well, which can be data engineering side of it, or data science side of it, more towards your databases side of it, which will make sure that your software works pretty well with other components revolving around that. We will go again deeper on the next episodes on the components that comes into it. The third is OS. OS is nothing but operating system. तो आपको सॉफ्टवेयर होगा, आपका हार्डवेयर होगा, ये दोनों बात नहीं करेगा. इससे बात करने के लिए आपको बीच में एक OS लेकर आना पड़ेगा. So if you see, if you are a gamer, you might have bought games which will say like for this game there will be system requirements, which will be like Windows 98 and above. इतना RAM होना चाहिए, इतना memory size होना चाहिए, इतना graphic card होना चाहिए. All these are OS. So OS requirements होना चाहिए so that this software would be able to talk with this hardware. So that's where OS comes into picture. Major roles here would be like Linux kernel developers, Linux OS developers, and then with mobile coming into picture, mobile के लिए there are a lot of OSs like Android developer, iOS developer, Android native app developers, Android SDK developers, iOS SDK developers. These are people who work on OS. तो पहले अगर मुझको सीखना हो, जैसे लेट्स से नॉन टेक से करियर मैंने स्टार्ट किया और मैं टेक में आना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई बुक है या मेरे लिए कोई यूट्यूब के वीडियो हैं? मुझे कैसे सीखना चाहिए कि क्योंकि ये तो मुझे थोड़ा फ़ैसिनेटिंग लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मतलब कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी एग्ज़िस्ट करती हैं फ्रंट बहुत सारी डीप में जा सकते हैं, जैसे आपने बताया हार्डवेयर साइड भी है, सॉफ्टवेयर साइड भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम साइड भी है। तो क्या कोई सीखने का आसान तरीका है इस चीज़ का? बहुत सारा है like we have content, you have chat GPT आजकल which you can easily run things across. It will help you out with most of the technology. Again, as I told, right, so आपको understand करना पड़ेगा ये software. Like for example, if I say कि like Java, then you should understand Java मतलब software का है, hardware का नहीं है, इसका नहीं है. And when you have a job description saying Java, and you have a resume which talks about Java along with multiple other things, you should understand वो बंदा का responsibility पर वो कहाँ fit होगा, hardware पे fit होगा, software पे fit होगा, और OS पे fit होगा, and then basically put him across into it. वो understanding होना चाहिए. And we have multiple places. We have
There are many recruitment courses that we have. We also have content. We also have again, as I told, the ChatGPT app. Just put a search and it will be able to help you out with it. So if you are proactive, if you are eager to learn it, you have multiple ways to learn it. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ इट आपको ये तीन चीज में अलाइन करना पड़ेगा, आपका जेडी एंड आपका रिज्यूमे. सो इस तीन चीज पर वी हैव टू डीप डाइव इनटू इट. सो एज आई टोल्ड, फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ओएस. OS is more important when it आजकल जमाना पर when it more into mobile side of it, OS comes plays a very major role, specifically around iOS, Windows, and Android side of it. Software is the major role that comes in. Like 90% of your roles would fall under software with multiple languages there. Software पर there are different again segregations, like backend क्या है, frontend क्या है, databases side क्या है, IT infra side of it क्या है, data machine learning क्या है, data analysis science क्या है, and then we have hardware. So on the अगर next, किसी को सीखना हो तो बेसिक क्या फंडामेंटल है जो इतना सीख ही लेना चाहिए? जैसे आपने बताया कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनमें से भी कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जो सीखने की, कि कौन सी प्रोग्रामिंग किसके साथ में आती है, कौन सी चीज किसके साथ कंपेटिबल होती है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए लर्निंग? so basically again the first initial thing that a person has to learn is क्या क्या languages है, and ये language change होता जाता है. Like for example 2008 2009 पर in the front end side of it you had jQuery, Dojo, YUI ओके, kind of frameworks. But ओके, आजकल वो यूज नहीं करता है. आजकल React JS, Angular JS इस बार it goes in. So this keeps changing on. So a recruiter has to adapt for the new technology that keeps coming on. 2008 2009 में Golang भी नहीं था. आजकल Golang is something that we are using for blockchains and stuff, right? So वो अपडेट होना चाहिए. That is one of the major thing. But at the same time, so when you say languages, right? So programming language can be used for anything. Like typical layman example, per if you have to pluck a flower, so you can pluck it with your hand, you can pluck it with your knife, or you can also use an axe to pluck it. But optimized क्या है वहाँ? It is your hand to pluck a flower is optimized. Or as the same problem statement changes to a tree, you have to cut down a tree. Axe, you can do it with your hand also, but zamana lagega उसमें, right? But axe is the optimized way of using it. So ऐसा ये programming language का है. A programming language can be used, any programming can be used to solve any particular problem statement. But then उस problem statement के लिए there can be optimized programming language which is well defined, well tested, and well known in the market. तो वो यूज करेगा ऑन दी डेवलपिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो पहले हमको बेसिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस जमाने पर क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाउ इट इज यूज एंड विच लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड ऑफ इट इज यूज. एंड देन हमको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा कि लेकिन इस प्रॉब्लम सेट के लिए ये टेक्नोलॉजी विल बी बेस्ट फिट फॉर अस. सो एज अ रिक्रूटर जब भी हम लोग हायरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या ये लैंग्वेज कौन सा हमें हायर करना है, ये मैनेजमेंट की तरफ से या जो भी लोग डिसीजन मेकर होते हैं, सीटीओ या प्रोडक्ट मैनेजर, उनकी तरफ से आता है, या हमारे लिए ये बेसिकली लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता, ये रहता है कि हमको फ्रंट एंड या बैक एंड का इंजीनियर चाहिए? So typically, when a requirement comes in, you would get it from the CTO or no, the hiring managers who are the decision makers, right? So they would basically frame, like if you start as a software development side of it, you would basically understand ये software development ये problem solving के लिए है, ये problem solving के लिए this language is good, so we will hire people for this role with this language skills, and this becomes a JD and this comes to technical recruiter. So typically ऐसा ही start करता है career as a fresher. If you're starting your technical recruiter journey, this is how it starts. But then as you grow in your hierarchy, right, you would have to also educate your hiring manager कि लाइक नो ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा, इसके लिए आप ये चूज करना पड़ेगा, इसके लिए ये चूज नहीं करना. दिस वुड बी द क्लोज मैच फॉर दिस पर्टिकुलर. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ सपोज देयर इज अ हायरिंग मैनेजर हु इज कमिंग एंड आस्किंग यू कि लाइक मुझे रस्ट वाला बंदा चाहिए, right? Probably you would not get Rust people in the market so very much. Like a handful of people are there in Rust language. But then the closest match for Rust would be Python. So it would be easy for you to hire a Python language guy and train him into Rust rather than putting most of your efforts and waiting for the right person to come in. So a education karna padega for a technical recruiter to hiring manager, and this would come with experience as and when सो you start dealing with it. सो बेसिकली आप ये रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर मैं नॉन टेक में हूँ और टेक में अगर टेक रिक्रूटमेंट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ,
तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं गूगल से, यूट्यूब वगैरह से या चैट जीपीटी से मैं खुद ही समझ सकता हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे कंपैटिबल होती है। बाकी मैं थोड़ा-थोड़ा टाइम अपना अगर अपने किसी अच्छे डेवलपर्स के साथ में या सीनियर सीटीओ या किसी सीनियर इंजीनियरिंग वाले लोगों के साथ में स्पेंड करूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि अगर रेडीमेड स्किल्स वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो हम किनको कोच करके, ट्रेन करके अपने लिए हायर कर सकते हैं। Correct. So where we can take, and best part of recruitment is like, you have these people close to you. It's not like, you don't have people who you can't ask for, right? Your hiring manager has all the essential knowledge that you need to get, so you can always get it. And the second thing is your candidates. Like, candidates से बात कर लो, as and when you talk to candidates, they would be also able to help you out. Like, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ नहीं मिलेगा, reference कर सकते हैं वो. So this also is your key to success, right? So get knowledge, and as you told, right? So a recruiter is as good as the knowledge that he has. नॉलेज नहीं है तो हाफ बेक रिक्रूटर ही होगा आपका. तो द नॉलेज इज अवेलेबल abundant, and it's not like, you don't know where to go. You know places, you just have to go and get it out. That's Well, the basic thing. very nice. So by today we covered two topics. First topic is about the KYC कि know your customers. अगर जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने कस्टमर के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में या जिस रोल के लिए हायर कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें. और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई टेक्निकल रिक्रूटमेंट में आना चाहता है तो क्या ही निटिग्रिटी है उसके लिए, क्या क्या चीज़ें उनको सीखना चाहिए, कैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम साइड सीखना चाहिए, और एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ फिट बैठती है, किसके साथ कंपैटिबल होती है. उनके लिए थोड़ा-सा टाइम आप अपने इंजीनियरिंग लीडर्स के साथ स्पेंड करें, अच्छे डेवलपर्स के साथ स्पेंड करें. उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा. करेक्ट. एंड टुडे वीडियो पर वी कवर कि, लाइक, नो, से इफ देयर इज अ जेडी विथ यू, मैच कर लो वो जेडी को, वेदर इट्स गोइंग टू बी ऑन अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर ऑन अ ओएस साइड. वो मैच करके देख लो कि, लाइक, इफ इट इज द राइट वे. नेक्स्ट वीडियो पर वी विल गो डीपर ऑन द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ इट. सॉफ्टवेयर में डिफरेंट लेयर्स है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस लेयर, ऐसे डिफरेंट लेयर्स है. उसमें विल गो डीपर. से कि, लाइक, नो, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज है तो ये लेयर है. And then उसमें you will be able to figure out in software development side of it, if a profile is coming in this way, where I can fit him for this particular layer. वेरी So नाइस. we will do it in the next session. ओके ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. रियली अप्रिशिएट. Thanks, thanks, man.